Assalamu alaikum, student. Today, as per our course plan, Form 613, we are going to perform experiment on determine the disintegration time of film coated tablet. तो हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। बिल्कुल इसको उसी तरह करना है जैसे कि हमने अपने पहले डिसइंटीग्रेशन टाइम हमने मालूम किया था अनकोटेड का, फिर उसके बाद हमने मालूम किया था डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ एंटायर कोटेड का, फिर हमने उसके बाद मालूम किया था डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट। ये सारे डिसइंटीग्रेशन टाइम एपेटस को लेके सिमिलर हैं। अगर डिफरेंस आएगा भी तो वो उनके मीडियम में आएगा, टाइम ड्यूरेशन के अंदर आएगा। स्टैंडर्ड somehow सबका similar है। Okay, let's start today's experiment. Experiment number 4. Object to determine the disintegration time of sugar-coated tablet. Requirement as usual basket track assembly. Tablet चाहिए हमें कोई भी sugar-coated. थ्योरी क्या है इसकी? थ्योरी है कोटेड टैबलेट। इससे पहले भी मैंने फिल्म कोटेड के अंदर कोटेड टैबलेट बताई थी। डेफिनेशन क्या है? टैबलेट coating can be defined as the application of edible paint on the surface of the pharmaceutical dosage form. You can see in this picture how they are spraying edible paint on the tablet surface. In this picture, you can see a tablet internal structure with the help of the lens. The blue color is showing the coating material, and the inner is the core, the active API surrounded by the coating material. Sugar coating कितने स्टेप हैं इसके अंदर, हम इसको देख लेते हैं। Following steps are involved in sugar coating. Number 1, sealing. Number 2, subcoating. Number 3, the smoothing. Number 4, coloring. Number 5, polishing. And number 6 is printing. अच्छा, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कंप्रेस कोर हो जाएगा, टैबलेट बन जाएगी, ठीक है। मगर अगर डिजायर है उसके ऊपर शुगर कोटिंग करना ड्यू टू सम रीजन लाइक मास्किंग द बिटर टेस्ट और enhance the texture of tablet, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीलिंग। नंबर 2, सीलिंग के बाद सब कोटिंग। सब कोटिंग हो गए। सब कोटिंग के बाद आप यहाँ पे देखेंगे उसको स्मूथ किया जाएगा, फिर उसकी कलरिंग होगी। वो कलर जो कि किसी भी ब्रांड ने अपने लिए मखसूस किया हुआ है, तो वो उस हिसाब से उसको कलर करेगा। एंड देन पॉलिशिंग। ओके, हम पहले स्टेप सीलिंग को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सीलिंग का क्या मकसद है? टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। अ सील कोट इज अप्लाइड। अब क्या चीज है ये? अ फिल्म ऑफ वाटर impervious polymers is built up using the material such as number 1, shellac. Shellac is the most commonly applied sealant agent, but it offers the problem of increasing the disintegration and dissolution time on aging because of the polymerization of the shellac. Second ingredient,
which is used for the sealing, is the Zine. Zine is also used as a sealant. It has no problem as associated with the shellac. Third ingredient, which is used as a sealing, is the cellulose acetate phthalate और या फिर कोई दूसरा जो जैसे कि polyvinyl acetate phthalate. Second step in sugar coating is the subcoating. Subcoating during the sugar coating process, the increase in weight achieved can be around 30 to 50% of the weight of the original tablet core. Subcoating serves to confer on the tablet core a perfectly rounded aspect. The solution of the gum acacia powder is prepared called gum-based solution, which is sticky, greasy in nature. This solution is poured on the tablet and after that immediately dusting with calcium carbonate is carried out. All the steps repeated again and again till the tablet become round. It is the distribution of a gum-based solution followed by the dusting and drying. This step continue within the required tablet sizes obtained. Number third step is smoothing. The product at the end of the subcoating will be too rough to continue with the coloring coating. So we do the smoothing. The smoothing is usually achieved by application of plain 70% weight by weight syrup. The smoothing is also known as glossing. Fourth step in sugar coating, color coating. This is one of the most important steps in the sugar coating process as it has immediate visual impact. During this step, the coating syrup contains the color necessary to achieve the desired shade. So we use the water soluble dye. Previously, it was used as a coloring agent for the sugar coating tablet, but now the largely is used in modern water insoluble pigment, including aluminum flake of the water soluble color. Number fifth step, polishing. After the color coating process, the tablet have a somewhat dull matte appearance, which require a separate polishing step. To achieve a glossy finish, the final stage involving the application of waxes like the bee waxes, Canova wax is employed. First step is done in the conventional coating pan and second step, which is the final step, is done in the canvas coating pan. Number sixth step, final step, printing. Unfortunately or unlikely, the film coated tablet, sugar coating tablet cannot monogram by engraving the punch tooling. Instead, a printing process is used. A typical edible pharmaceutical ink formulation is the shellac, alcohol, pigment, lecithin, antifoam, and other organic solvents are used for the printing purpose. There are some benefits of sugar coating. What are these? Number one, why we do the sugar coating? Number one, for taste mask. Number two, odor masking. Number three, elegant appearance. Number four, easy to identify by the patient. And number five, protect light and environment. Number six, printing can be done on sugar coated tablet. After advantages, there must be some disadvantages of sugar coating. What are the disadvantages? Number one, it requires specialized and trained personnel. Number two, the process is labor intensive. More labor is required. Number third, it requires a long process time.
Number 4, sugar-coated tablets are not amenable to embossing. Number 5, sugar coating increase the weight and the size of the tablet. It may be cause the swallowing difficulties for a patient or especially the children patient. Okay, let's discuss some common problem that can occur during the sugar coating process. Number 1, stripping of the tablet coating. Stripping is the breakdown of any fragment. This is often caused by a low concentration or absence of polymer. You can see stripping. Okay. Second problem, it is twinning. A group of the two crystal mutually united and intimately related is called twins, and the phenomena of the formation is called twinning. If tablets are not properly dried, then two tablets stick together like this. Tablet में like this. Chapping of tablet coating, cracking, twinning and now mottling. अब mottling में क्या होता है भाई? Uneven distribution of the color on the tablet with the light and the dark spots. किस तरह से? आपको दिखाते हैं. In this way, you can see the light and the dark spot on the tablet. This is called mottling. Equipment जो कि इस्तेमाल होगा डिसइंटीग्रेशन टाइम को डिटरमाइन करने के लिए ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट. सिमिलर क्या है इसका नाम? इसका नाम है बास्केट रैक असेंबली. In this experiment, the apparatus used is a basket rack assembly which consists of 6 open-ended transparent tubes. These tubes are held in a vertical position by the two plates with 6 holes. Equidistant from the center of the plate and equally spaced from one another. A suitable mean is provided to suspend the basket rack assembly from the rising and lowering device using a point on its axis. This is the structure. Glass tube, basement of the cylinders, and this is the disc. Top view, bottom view, side view. This is the medium. Enter the basket assembly. अच्छा भाई, प्रोसीजर क्या है? प्लेस करना है 1 dosage unit in each of the 6 tubes of the basket and if prescribed add a dose. वो उसके मोनोग्राफ के अंदर लिखा हुआ होगा. हर फॉर्मुलेशन का अपना अलग मोनोग्राफ होता है और एक चैप्टर होता है जो कि किसी भी प्रोसेस को बताता है, जैसे कि चैप्टर 701 यूएसपी फार्माकोपिया के अंदर है. तो आपने प्लेस कर दिया 1 dosage form in each of the 6 tubes of the basket as per the monograph अगर उसका मौजूद है. Number 2, operate the apparatus using the specified medium in a beaker. Maintain at 37 plus minus 2 degree centigrade as immersion fluid. वो जिसके अंदर के हम इस बास्केट को इमर्स करेंगे. At the third, at the end of the specified time, lift the basket from the fluid and observe the dosage unit. Number 4, if 1 or 2 dosage unit fail to disintegrate, repeat the test on 12 additional dosage form. यकीनन 6x के बैच पे हम करेंगे. मगर अब रिक्वायरमेंट क्या है स्टैंडर्ड की, जो कि हम 701 में यूएसपी डिस्क्राइब करता है. The requirement of the test are met if not less than
16 of 18 dosage unit tested have disintegrated. यूएसपी मोनोग्राफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वैसे तो प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर द डिले रिलीज टैबलेट कैप्सूल और the formulation with the acid resistant and enteric coated, वो भी यही कह रहा है कि one dosage unit in each of the 6 tubes of basket. If the dosage unit are not sugar coated, process the acid stage. If testing tablet that have a soluble external sugar coating, immerse the basket in water at room temperature for 5 minutes and then immediately proceed to the acid stage. If specified in the monograph, add 1 dust to each tube. देखिए अगर वो शुगर कोटेड है तो उसको 5 मिनट्स के लिए हमने फौरन ही वाटर के अंदर इमर्स करना है और फिर उसके बाद हमने एसिड फेज पे जाना है। एसिड फेज की क्या रिक्वायरमेंट है? आपने 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आपको बताया था मैंने फेम्युलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है टेस्ट सोल्यूशन, उसके अंदर उसको इमर्स करना है या फिर जो मोनोग्राफ के अंदर डिस्क्राइब होता है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट वो ये 37 डिग्री +-2 सेंटीग्रेड, टाइम 1 आवर है और आफ्टर 1 आवर नो डोजेज unit show evidence of disintegration, cracking or softening. Proceed with the buffer stage. अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? ये आप देख लें, ये basket track assembly है. The tablet was checked in each tube at the end of the operation और the tablet comply with the test. If all 6 tablets disintegrate in 60 minutes, if there is any tablet does not disintegrate, the test will repeat using 6 new tablets by replacing the disintegration medium. वाटर भी हो सकता है, वो 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है जो कि मोनोग्राफ में उसके मौजूद है। The tablet comply with the test if all 6 tablets disintegrate in the acidic medium. अच्छा, फिर आपको इंशाल्लाह after this corona will be over इंशाल्लाह very soon, हम हमदर्द में मिलेंगे। वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ऑब्जर्वेशन आपने लेना है, आपने रिजल्ट लिखना है, उन रिजल्ट को आपने डिस्कस करना है विद द बिलो रेफरेंस और डिस्कशन राइट अप करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया तो अपने सवालात इकट्ठे करके रखिए या अपने सीआर को कम्युनिकेट सीआर को कम्युनिकेट कीजिए, वो मुझे आगे बता देंगे। अभी तक सवाल का जवाब को देने का तरीक़ेकार वाज़ा नहीं हुआ है, जैसे ही होगा फिर आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।